Hey guys, good morning. Welcome back to my channel and this is my new vlog. तो दोस्तों आज का vlog है आज हमारे कुत्ते पे हो रही है खुजली टाइप की, जो कि ज़्यादा हो रही है और परेशान हो गया। वो एक जगह पे खड़ा नहीं रह पा रहा है एंड बैठते जा रहा है। तो मेरे साथ जा रहे हैं देवेश एंड देखो आप जा रहे हैं कुत्ता एरा। तो दोस्तों आइए ले चलते हैं अपने कल्लू को, जो कि कुत्ते का नाम है कल्लू। एंड अब ले चलते हैं हम कल्लू को डॉक्टर के पास, डॉक्टर से दिखाएंगे एंड उसके बाद बोलते हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं। तो बने रहिए ब्लॉग में। आपको तो दोस्तों आप देख सकते हो अभी कुत्ते को लगी है पोटी एंड वो कर रहा है अभी पोटी बाथरूम तो अभी कर रहा है, उसे करने दो। उसके बाद चलते हैं हम लंबा मार्केट, उसे दिखाएंगे डॉक्टर के पास। तो चलते हैं। तो दोस्तों आज जा रहे हैं हम पैदल एंड जो कल्लू है वो गाड़ी पे नहीं बैठ पाता है, स्कूटी पे हाई गुस्सा में सॉरी, एंड इसलिए जा रहे हैं हम आज पैदल। एंड तो अभी देखिए अभी हमारा मार्केट कितना दूर है, बहुत दूर है। तो चलते हैं हम। दोस्तों जो कि आप ये देख रहे हैं पीछे, ये है हमारे यहाँ का प्राइवेट स्कूल एंड छोटे बच्चों का स्कूल है। तो जहाँ की यूकेजी नर्सरी वगैरह 9 तक की क्लास होती है एंड 8 तक की क्लास होती है। चलते हैं डॉक्टर के पास, अभी हमने कल्लू को दिखाना है एंड वो पैदल ही चल रहे हैं आज। से हो चुका है हमारा मार्केट स्टार्ट एंड आप देख सकते हो बहुत सारी गाड़ियां हैं एंड अभी जाना हमने उधर। तो चलते हैं अभी। तो दोस्तों हमें लग चुकी है थक एंड अभी हम बैठे हैं एंड अभी आप देख सकते हो कुत्ता ही बैठा है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि कल्लू को भी बहुत थक लग गया है एंड उसे तो दर्द भी बहुत हो रहा होगा। तो अभी वो बैठे हैं एंड अभी हमें थोड़ी दूर जाना है अभी और, जहाँ के भी डॉक्टर हैं तो हमें भी वहीं जाना है। तो चलते हैं अभी। Let's not pretend our hearts have life again. Just stay one more night.
दोस्तों हम पहुंच चुके हैं डॉक्टर के पास एंड अभी हमें चढ़नी है थोड़ी सीढ़ियाँ, मतलब हमें ज़्यादा नीचे सीढ़ियों से नीचे एंड चलते हैं। तो दोस्तों अभी कुत्ते को थोड़ा राहत मिली है, कुत्ता नहीं कल्लू को अभी राहत मिली है एंड अभी डॉक्टर से इंजेक्शन लगा के आए हैं एंड उसके बाद आपने देखा कि इंजेक्शन लगाया और रात को तो इसने बहुत ही परेशान किया है, ना ही सोने दिया और ये पूरे कमरे में घूम रहा था, गोल गोल चक्कर काट रहा था कमरे के एंड अभी उसको राहत मिली है एंड अभी चल रहा है सीधा। तो अब चलते हैं हम घर। Can't believe how it all turned out. Bring me the light, 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 bring me the light. तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके घर पे एंड कल्लू कर रहा है आराम एंड अब उसे 1-2 घंटे बाद उसे नहलाना है और 1 हफ्ते बाद उसे फिर से इंजेक्शन लगवाना है। तो ब्लॉग का एंड यहीं पे होता है और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।